तो गाइस स्टार्ट करते हैं। Okay, sir. I think how many of the members have joined? There are सर 36 पार्टिसिपेंट ज्वाइन members. कर रहे हैं। यस यस। We should start it, sir. हाँ स्टार्ट करते हैं। Respected all, first of all, I welcome ICA Vikas Goyal from Ludhiana, Punjab. Welcome you all on this webinar on GST. Now, as I'm able to see from NIRC, uh, uh, certain team members are still to join. I welcome CA Parvinder Singh ji, Chairman Kurukshetra branch, and then I welcome our Honorable Chairman NIRC of ICI, CA Abhinav Agarwal ji, very learned personality, and today's speaker, CA Ayush Shah. Perhaps he need no introduction, but since formal introduction is required, so I will be giving his formal introduction. Dr. Ayush Shah is practicing chartered accountant, specializing in GST matters, audit and income tax. He is a doctorate and has submitted his thesis on the impact of implementation of Ind AS in financial statements of select Nifty 50 companies. This is a big achievement. He also contributes articles on various issues related to GST law in various forums. He is a speaker on GST matters on various forums all over the country. He is also a panel as a faculty with Indirect Tax Committee of ICI. He has also co-authored a book, Practical Guide to GST Compliances, published by Taxman Corporation. He is a regular faculty and conducts seminar and workshops for Taxman Corporation. Dr. Saraf served as the chairman of Guwahati branch of the Institute of Chartered Accountants of India. He is also serving as a member of Grievance Redressal Committee for the Northeast region formed by GST Council. We know that government also has various priorities for Northeast region. And Dr. Saraf has been a guest faculty in the Department of Commerce, Guwahati University, deliberating on taxation and financial management. He has been associated as a guest faculty in the MBA department of Guwahati Commerce College in the Strategic Cost and Management Accounting and the Institute of Rural Management in Audit, Financial Management and Accountancy. Dr. Saraf has also acted as a guest faculty in Department of Posts, Government of Assam. Dr. Saraf, prominent face in local news channels over financial issues. Apart from these, he is also active in various social organizations and has served as the president of Lions Club of Guwahati. Now, with those words, I think this much of introduction is enough for those present to know the caliber of Mr. Ayush Saraf. With those words, I would like to now hand over the mic to Mr. Ayush Saraf for further deliberations with members. Thank you so much. Sorry sir, Excuse would me. like to interrupt you. Yes sir. First of all, आयुष सर बस 1 मिनट लेना चाहूंगा। हमारे साथ में परविंदर जी भी हैं, ब्रांच कुरुक्षेत्र ब्रांच के चेयरमैन। मैं चाहूंगा पहले कि कुछ एनलाइटन हमें परविंदर भाई भी करें अपने एक्सपीरियंस से। परविंदर भाई प्लीज अनम्यूट कर लीजिए परविंदर भाई। Thank you, Abhinav bhai. Respected Chairman NIRC, CA Abhinav Agarwal ji, CA Ayush Saraf ji, guest speaker, and CA Vikas Goyal ji, moderator of the session. All seniors and professional colleagues attending webinar. On behalf of Kurukshetra branch, I welcome you all in today's session on crucial aspects of search and seizure in GST. It's my honor to be coordinator of the event, and I would like to thank Chairman NIRC, CA Abhinav Agarwal ji and NIRC team for giving me this opportunity, as this is a very wonderful step by Chairman to share knowledge through webinars and involve branches in the program. I'm happy that CA Ayush Saraf ji will share their knowledge on search and seizure under GST, which is a very good area for professionals, as we need to know what are the powers of officers and right of assessees and professionals during search and seizure, because all future proceedings depends on that time submissions.
I hope this session will help professionals in their profession. Thank you, everyone. And we have with us CA Shalini Gupta ji, Vice Chairman. Over to you, Shalini ma'am. A very good evening to all of you. So, our chairman Abhinav ji and Parvinder ji, program coordinator, and Vikas ji from our own city, Ludhiana, my home city, and today's speaker. So, really appreciable, Abhinav ji, the series we have started, a number of series we have started. I think we have started 9 series in different topics. Like we have a Shakti series also in this series, and a very good platform to join different speakers. And as we are now have started joining the coordinator of different chairman of branches. So the theme or the purpose is to have the feeling of we are doing jointly programs. तो बहुत ही appreciable step है और let's begin the learning process now. Thank you everyone. Thank you, Shalini ji. Respected our guest speaker of today's session, CA Ayush Saraf ji, my vice chairperson Shalini Gupta ji, my CA Parvinder ji, chairman Kushetra branch, CA Vikas Goyal ji, moderator of this session. Today's session, I welcome all my esteemed members. I welcome all of you in our second series of Gurukul and third day of our online bootcamp on GST series. मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, हमारी अभी टोटल 9 सीरीज हैं जो इफेक्टिवली हमने एक एक प्रोग्राम सारी सीरीज में कर दिए हैं. ये हमारी सेकंड सीरीज चल रही है अभी गुरुकुल के अंदर. कल हमारा प्रोग्राम आईबीसी सीरीज के ऊपर है, हाउ टू बिकम अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. काफी एमिनेंट स्पीकर्स को हम इनवाइट करते हैं. मेरी आप सब मेंबर से यही रिक्वेस्ट है कि जो फ्लायर्स जिस तरीके से आप लोग ज्वाइन करते हैं, जो कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप वो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए. हमारा और स्पीकर का दोनों का मोटिवेशन आपके ज्वाइन करने से ही बना हुआ है. एज नंबर ऑफ मेंबर्स इनको ज्वाइन करेंगे, हम जिसकी भी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं, तो वो काफी एक बेनिफिशियल हमारे लिए भी और आप सबके लिए रहेगा. नेक्स्ट सीरीज कल हमारी हाउ टू बिकम आईबीसी प्रोफेशनल है अंडर अवर संवाद सीरीज. इसके बाद शक्ति सीरीज के अंदर हमारा एक बैलेंस वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर सीरीज है जो शालिनी जी लीड कर रही हैं. तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जीएसटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टॉपिक्स कवर करते हैं अपने बूट कैंप्स के अंदर, ऑनलाइन सीरीज के अंदर. सो प्लीज कीप इन टच, कीप कनेक्टिंग विद अस. और जो एज नंबर ऑफ मेंबर्स को आप जितने ज्यादा शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर ऑल ओवर दिस सेमिनार डिटेल्स. थैंक यू. Now I would like to request Ayush Saraf ji, please start the session. Thank you so much, sir. At the very outset, I would like to thank NIRC for giving me this opportunity to deliberate in this forum. And I would like to thank Chairman NIRC Abhinav Agarwal ji for this initiative. I've gone through the topics of the 3 sessions on GST, and let me tell you, all are very cherry-picked topics. Navya ji in his absentia, he called me up some days back that we need to do a session on GST. So I said, कौन सी topic लें? तो उन्होंने बोला आप बताओ. मैंने बोला जो भी topic it's important for the members and members require, वो topic दे दीजिए आप. So he dictated that crucial aspects of search, seizure and inspection under GST. I said the best topic which is relevant for the present times and which is disturbing most of the members and concerning the business community at large. So a very well taken topic, sir. Thank you for the same. Parvinder Singh ji, Chairman Kurukshetra branch, CA Vikas Goyal ji, and Shalini ma'am. I would like to thank all of you for organizing this webinar. So I would like to come straightway to the topic. The topic for the day is crucial aspects of search, seizure, and inspection under the GST law. Now, if we look into the GST law, there are provisions for output tax payment, for input tax, for registration, for invoicing, assessment. Similarly, there are provisions for search, seizure. And nowadays, these days, whatever we are observing,
that there are high pitched demands, there are searches, and consequent payments are being made because of those searches, and there are some forced payments which are being made by the SSEs. So we need to understand the intricacies of these searches. What are the rights? Like the moderator said that we need to understand what are the rights of the SSEs, what are the duties of the chartered accountants, what we can advise our clients, and what are the powers the officers actually have, and what are the duties they need to discharge when a search is conducted. So in today's session, we shall try to touch upon these aspects, and we shall try to make it as interactive as possible. And I request all the participants to kindly ask the question immediately as and when it is there, so that we can make it more interactive. I'll just share the PPT. Yes. Okay. So the provisions of inspection, search and seizure are contained in section 67, 68 and rule 139. These are the provisions, basic provisions. In income tax, we have similar provisions, but we don't have inspection per se, there is survey. Okay, so in GST, we have inspection, search and seizure. Inspection is one, search and seizure is one, but both the provisions are contained under one section. Now, what are our fundamental rights with regards to search and seizure? Article 19(1)(g), which specifies that every citizen has the right to practice any profession. Okay. 23, that is no one can be a witness for his own cause. That means anyone cannot be compelled to become a witness against himself. And Article 21, no one shall be deprived of his life or personal liberty. Okay, but all these rights are not absolute. There are reasonable restrictions posed by the government on public interest. Article 265, no taxes shall be levied or collected except by authority of law. So these are basic constitutional rights, fundamental rights. The Article 265 is a constitutional provision basically, but the above three are constitutional fundamental rights of every citizen. And any challenge to these provisions and also requires a test of these fundamental rights. Yes, so these are the provisions. I'll straightway go to I'll share this PPT later on. Yes, see the section 67 and rule 139. It is a very big section with 12 subsections in it. So many times we get queries from members that where this provision is contained. So when we tell them that this is there in this subsection, actually the problem is that the section is very big, so members miss certain issues. So I have just prepared a bird's eye view of the entire section with subsection wise analysis. So this will be there for your help. This is the bird's eye view of the rule. Yes. Now let us come to inspection. What is an inspection? Basically, inspection shall mean to access and check the place of business of any person. Basic understanding of inspection. What do you mean by inspection? Inspection means inspect. Just go and see that much. Okay. Where the inspection can be done. Let us go to the section first. When can inspection be authorized? Now, inspection can be authorized by any officer not below the rank of Joint Commissioner. That means Joint Commissioner and above can authorize an inspection. Now, who can conduct? Any officer authorized by the Joint Commissioner. That means authorization has to be done by JC and above. Authorized officer can be any officer under the CGST or SGST as the case may be. Okay, so this is clear. Authorization has to be signed by the JC and above, and it can be conducted by any officer.
When can inspection be authorized? When JC and above has reasons to believe. Reasons to believe. This reasons to believe we shall discuss at a later stage as to what entails reason to believe. That a taxable person, what is the definition of a taxable person under the GST Act? It means a person who is registered or liable to be registered. Okay. So when the proper officer has reasons to believe that the taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or stock in hand. That means relating to outward supply. If he has an apprehension that certain outward supplies are being suppressed, that is one reason. If he has apprehension that the stock is inaccurate, if he has some reasons to believe. If he has reasons to believe that the taxable person has claimed input tax credit in excess of what he should claim, or any other contravention, with an intent to evade tax. Thus, if there is any contravention, two are specified very specifically. The third one contains any other contravention if it leads to evasion of taxes. So we have two specific reasons and one general reason. And these reasons are for a taxable person. Okay. So now let us understand whether an unregistered person can be inspected under this provision. Can anyone answer? Can we get an answer if anyone is there? Members? Not. Okay, no. Hello. All are saying no. Some are saying yes. Okay, good. Okay, can someone who is saying no can tell why? Why no? Short answer लिखिए. Yes, if he is liable to pay. No वाले भी कहो कोई. Anyone know? Just try. It is specifically said taxable person. Very correct. Very correct. It is specifically said that it has to be a taxable person. So taxable person may be registered or not registered. What is the definition of a taxable person, which I just said? Just a second, let me again share it. Yes. So what is the definition? The definition is who is registered or liable to be registered under section 22 or 24. So there are two criteria sections for registration, we all know. So even if he is not registered, but he deals in taxable goods and the proper officer has reasons to believe that he has evaded tax or he is doing something which shall lead to evade tax. So in that case, even an unregistered person can be inspected. Very clear. Any counter questions in this one? It can be, you can please ask. Next category. The first category is any taxable person. Next category, any person engaged in the business of transporting goods or owner or operator of warehouse, godown or any other place, keeping goods which have escaped payment of tax. Now in this second category, what they are including: engaged in the business of transportation or a warehouse keeper or a godown person. Now, why this provision has been introduced? We all can say that these people, transporters or operators of warehouse, they fall under taxable person. So why is this specific or a different category required? Anyone who can answer? Why is this specific category required?
प्लीज आंसर करिए, तब समझेंगे हम लोग. Why is this specific category? Because both this transporting, maybe the GTA, even if he's not liable to pay, but the tax is payable on the RCM basis, and if he pays on forward charge basis, then he is a taxable person directly. He is also paying tax. An owner or operator of warehouse, that is a taxable service. So they both get covered under the definition of taxable person. Exempt goods, Abhirup ji, sir, how? एग्जेम्प्ट गुड्स से क्या मतलब हुआ इसमें? ट्रांसपोर्टर में भी अंडर आरसीएम एंड में नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन. अच्छा प्रतीक जी, और कोई? As transporter and go down have goods of other person. एकदम सही सर. नमन जी, गुरमीत जी, वेल डन, आपने बहुत सही जवाब दिया. आपने कहा कि ये दो जो कैटेगरीज है ना, दो जो सब कैटेगरीज है, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाले ट्रांसपोर्टर्स और वेयरहाउस कीपर्स, ये दोनों दूसरे टैक्सेबल पर्संस का सामान रखते हैं अपने यहाँ पे. तो व्हेन अ सिचुएशन अराइजेस दैट the proper officer has reasons to believe that this transporter has goods belonging to Mr. A, which is kept there as कच्चा गुड्स, मतलब इवेजन के लिए वहां पे रखा गया है, अपने गोडाउन पे नहीं रखूंगा, ट्रांसपोर्टर के यहाँ पे मैंने रख दिया. ओके, नाउ व्हेन इंस्पेक्शन इज ऑर्डर्ड देयर, दैट इस गोडाउन में जाके आप देख लो, देन व्हाट विल द ट्रांसपोर्टर से? ट्रांसपोर्टर कहेगा कि सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 पढ़िए सर आप, उसमें कहा गया है कि टैक्सेबल पर्सन अगर कुछ करता है ना, तब आप उसका सामान आप मतलब आप इंस्पेक्शन कर सकते हो. यहाँ पे तो जो माल पड़ा है वो मेरा है ही नहीं, वो तो किसी और का है, तो आप इसका इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हो? So that's why a specific provision has been inserted, which says that any person engaged in the business of transporting goods or operator of warehouse where goods has been kept there with a view, with a intent to escape tax. So now they cannot deny and they have to cooperate, and inspection shall be deemed to be done on the taxable person also. Okay. Okay, so one more question is there. Can inspection be authorized for review of routine matters? Suppose there is a difference between GSTR 2B and your GSTR 3B. Yes, गुरमीत जी सही है. Yes, बताइए. नहीं कर सकते गुरमीत जी? ओके, और बताइए, और बताइए सर, और कोई? Whether inspection can be done in case there is a difference between GSTR 3B and books or 2B? No. No. Okay. These matters are covered under audit and should not be under inspection. Okay. Any other? There must be proper reasons for inspection. Very correct प्रतीक जी, आपने अंदर की बात बोल दी. दीपा जी आपने भी सही बोला. These matters are covered under audit and should not be under inspection. आप second point पढ़ो यहाँ पे. Has claimed ITC in excess of his entitlement under this act. इस head में the proper officer can very well inspect, but उस inspection is an extreme step. उस स्टेप को लेने से पहले they have other responsibilities. उनको सेक्शन 61 में ASMT इशू करनी चाहिए. सेक्शन 61 में नहीं हुआ, ऑडिट ऑर्डर करो. ऑडिट नहीं हुआ, आप और कुछ कोशिश करो to connect with the person. If still they are not cooperating, inspection can be done. तो जो दो जवाब आए थे ना, उन दोनों जवाबों को मैंने मिलाकर आपका जवाब दे दिया. मुझे कुछ नहीं आता था. So basically, inspection can be done in these cases also, sir, because the section specifically contains this head and it says any other contravention. Even for the smallest contravention, if he believes that there is evasion of tax, the proper officer is right in his view.
because the entire onus and the entire decision making has been left on JC and above. It is on him to decide whether inspection has to be done and whether he has reasons to believe on that. We will discuss these reasons to believe at a later stage. If any questions are there, you can please keep on asking. Okay. There is one word in this section, has suppressed any transaction relating to supply of goods. So let us understand the definition of suppression. Section 74, explanation 2. For the purposes of this act, suppression shall mean non-declaration of facts or information. Non-declaration, we should have declared output tax. We have not declared output tax, which is payable, which a taxable person is required to declare. Okay. Or failure to furnish any information on being asked for. Okay. Suppose first point we understood, we should have declared output tax. We have not declared. Next point says that if an officer is asking for some information from you and you are not giving, that is also a suppression. Okay. Okay. If subsequently also, if you need any clarifications, I will be there. How can inspection be authorized by JC and above? In INS 01. Form GST INS 01 is the form for authorization. It is covered by Rule 139 sub Rule 1. Do provisions of CRPC apply in inspection criminal procedure code? No, it does not apply in case of inspection. Very clear. Does inspection give power to search? Only inspection does not give any power to search. There has to be a warrant for search. Whether premises may be inspected under, which premises may be inspected under section 67(1). Now let us see what is written in the section. I'll show you. Ayush ji? Sir. Sir, we have seen in Punjab that officers have been resorting to inspection without you can say taking even basic steps of investigation, like they have not been issuing any ASMT 10, DRC 01A or DRC 1 or 7 or audit provisions, and straightforward inspections are being ordered and are being conducted, and even taxes being got deposited. You can stay by using pressure tactics. Now, in those cases, whether it can be challenged that no other basic provisions have been used by the officers to, you can say, to ensure that revenue has been concealed by the taxpayer, and straightforward inspections have been ordered, and you can say permissions of JCs are also being taken like anything. But they are ordering inspections, even resorting to whether basic compliances have been done by the officers or not. Whether we can challenge it on the basis of that. Sir, you can very well challenge, but the problem is that once the person enters your premise, at that point of time, he is right. He is correct. He is correct. Because the section, what does the section say? Let us understand. क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछी नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब टैक्स प्रोफेशनल्स को हिट कर रही है, और बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बुरी तरीके से हिट कर रही है. यू आर वेरी राइट. और हाई, देखिए जहां पे हाई पिच चीजें होती है, उनके पास मैनेज करने के लिए भी रिसोर्सेज उतने होते हैं, मगर जहां पे छोटे स्टेक्स रहते हैं ना, द मेन सफरर्स आर दोज पीपल इन दीज केसेस. और जो सेक्शन है सर, उसने बड़ी प्लेन प्रोविजंस में उसको पावर दे दी है. अगर मैंने आउटपुट टैक्स नहीं जमा कराया तो, मैंने इनपुट टैक्स फालतू ले लिया तो, एनी अदर रीजंस फॉर सप्रेशन, ये बड़ी बेसिक प्लेन प्रोविजंस है. जीएसटी में मैंने छुपाना गया, या मैं आईटीसी ज्यादा लूंगा या मैं आउटपुट पे टैक्स नहीं दूंगा, तो इन दोनों में से उसको एक पे भी बिलीव है तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है. मींस दे नीड टू बी फर्दर, यू अंडरस्टैंड, मतलब दे शुड बी अप्लाइड इन दैट स्पिरिट इन विच दे हैव बीन मेड. सर, इसमें मैं आपको समझा रहा हूं, जो हमने अभी डिस्कशन की, कि दो दे हैव पावर, बट दिस इज एन इंट्रूसिव स्टेप. हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं सर. मुझे किसी से पैसे पाने हैं. I have to, Mr. A has to pay me 1000 rupees. मैं उसको बहुत दिनों तक प्यार से बात करते रहूंगा, फोन करूंगा, सर दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे, वही करूंगा. बैंकर्स भी वही करते हैं, बहुत दिनों तक प्यार से बात करते हैं, बिल्कुल लेटर्स इशू करते हैं, सब कुछ करते हैं. जब वो नहीं देता ना, लास्ट में जाके जब
वो पूरा फेल हो जाता है, तब उसके ऑफिस में जाया जाता है, उसके घर में जाया जाता। वो चीज मैं पहले दिन भी कर सकता था, डेफिनेटली। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मगर मैंने वेट की, मैंने आगे अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा किया, आई गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी। फिर बाद में जब वो फेल हो गया, तब मैं आई आस्क्ड हिम, आई वेंट टू हिज प्लेस। सो दैट इज द बेसिक थिंग विच वी शुड फॉलो। बट ये जो हाई हैंडेडनेस हो रही है ना, ये एक तो हो रही है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि लॉ में रीजन टू बिलीव दी गई है, और रीजन टू बिलीव लॉ ने कोई किसी जूनियर ऑफिसर के हाथ में नहीं दी है सर, ज्वाइंट कमिश्नर है, यस। ज्वाइंट कमिश्नर अबव को दी है। क्यों नहीं दिया गया सर एक असिस्टेंट कमिश्नर को? क्यों नहीं दिया गया ये पावर किसी सुपरिंटेंडेंट को? ज्वाइंट कमिश्नर अबव इसीलिए दिया गया कि वो इसे, दिस इज एन इंट्रूसिव स्टेप, और वो इसे बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। मगर अगर ये भेड़ बकरियों बकरियों की तरह ही अगर इशू की जा रही है, तो दैट डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ये सेक्शन उस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था। सो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मगर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आज अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गया ऑफिसर, आप a person a team inspection team has entered the office, now how will he send them back? He cannot say नहीं 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 मैं कोर्ट में एक चैलेंज करूंगा, उसके बाद वो बोलेगा अभी तो डेफिनेटली वो inspection कहेगा करवा लो। बाद में कर लेना चैलेंज, भाई अभी तो हमें अपना अभी काम तो तू करने दे। इंस्पेक्शन करवा, तू हमें फेस हाँ, करो, और बाद डेफिनेटली में देखते हैं। और बाद में उस बीच में बहुत सारी पानी बह जाएगी गंगा में। पानी बह, बिल्कुल ठीक है। So this is the basic problem, sir. Your point is well taken, but थिंग्स हैव टू बी। अब बड़े जो बिजनेस हाउसेस होते हैं ना, दे मैनेज दिस थिंग्स, क्योंकि उनके यहाँ पे इंस्पेक्शन हो भी गया, अब जिसके 2-3 लाख 4 लाख का इम्प्लीकेशन है, वो बाद में कौन सा हाई कोर्ट में जा सकेगा, या वो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम, इट इज नॉट सो इजी फॉर दोज बिजनेस पीपल। अगर इसमें और भी किसी भी पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछते रहिएगा। Yes, which premises can be inspected? Place of business, sir. Yes, any place of business can be inspected. Now, what is a place of business? Place of business includes a place where the business is ordinarily carried on, and includes a warehouse, godown where goods are stored. Okay, or where a taxable person maintains his books of accounts, or through his agent, where taxable person is engaged through his agent. So there are 3 classifications of place of business. So it is very clear that inspection cannot be done at home. It's clear, everyone? Am I clear that inspection cannot be done at home? क्लियर है सर, क्लियर है। Participants भी आंसर दो। यस, क्लियर है, एक आंसर तो आ गया क्लियर का। What is additional place of business is not registered on GST? उसमें भी आते हैं नमन जी हम। Yes, yes, if they have doubt to hide something at home. कपिल जी, आप नहीं सही, आप कुछ हद तक वहां तक पहुंच गए हो, मगर पूरा नहीं पहुंचे हो। मैं आपको बताता हूं, आप सेकंड पॉइंट देखो, अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर इंस्पेक्शन हुई और वहां कहा गया कि नहीं मेरे घर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तब वो क्या करेगा? तब वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाता है। इन दैट केस इंस्पेक्शन कैन बी डन देयर। अब आपने कपिल जी नहीं, यस, नमन जी ने पूछा व्हाट इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, what if additional place of business is not registered? Sir, if additional place of business is not registered now, the entire stock which is found there is treated as deemed to be supplied. रजिस्टर्ड है नहीं, वहां पे जाके अगर उन्हें पता चला कि आपका सामान वहां पर है, तो दैट वो एक तरह से प्लेस ऑफ बिजनेस ही आपका एडिशनल, whether it is registered or not. There was one more comment here which I would like to
Yes, if they have doubt to hide something at home, सर उस केस में नहीं कर सकते हैं. If they have doubt to hide something at home, उस केस में वो लोग नहीं कर सकते हैं. उसके लिए सर्च की ऑथराइजेशन चाहिए होगी. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उनको है, then in that case they can very well go to the home. अच्छा, इंस्पेक्शन उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां पे आ सकती है क्या? अगर वो कह दे कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो इस सीए, मेरे सीए के पास है, तब वो भी तो प्लेस ऑफ बिजनेस ही बन जाएगा सर. So we have to be very, very cautious. Powers of officers under inspection. सिर्फ देख के चले जाओ भाई, किसी भी चीज को छूना मत. Only this much. Can the premises of an unregistered person be inspected? Yes, we have already discussed. Next, अब आते हैं हम लोग सर्च पर. इंस्पेक्शन का सेक्शन था 67 सबसेक्शन 1, द फर्स्ट वन. सर्च की सेक्शन है 67 सबसेक्शन 2. सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन, लेस इंट्रूसिव, फिर आता है सर्च, मोर इंट्रूसिव. देखिए, लॉ भी उसी हिसाब से फ्लो कर रहा है. लॉ ने पहले सर्च के बारे में नहीं कहा, लॉ ने पहले इंस्पेक्शन. सबसे पहले लॉ ने इंस्ट्रूमेंट्स दिए सेक्शन 61 में, सेक्शन 65 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि आप उसके साथ वैसे एंगेज करो. अगर उन मीडियम से एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है, देन यू हैव अ पावर ऑफ 67(1) इंस्पेक्शन. इफ इंस्पेक्शन में भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, सर इंस्पेक्शन, सर्च एंड रेड, हम इसके डिफरेंस पे आएंगे, इट इज देयर इन द लेटर पार्ट. तो अब इन दोनों से नहीं हो रहा, तब सर्च में जाओ. तो लेस इंट्रूसिव से मोर इंट्रूसिव में जाने का ये फ्लो है. बट अगर हम डायरेक्टली उसको रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, 67(2) में अगर हम चले जाते हैं, इंस्पेक्शन को भी छलांग मार दिया जाता है बहुत जगहों पर. सो दैट इज द प्रॉब्लम which Vikas sir was speaking about, and there is no such apparent solution of this problem unless कि SSC उसको बहुत ओपनली और सही तरीके से हैंडल करे. उस समय जब वो लोग आए, उस समय अगर उनको सही तरीके से जवाब मिले या उनके साथ सही तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस की जाए, देन मे बी समथिंग माइट हैपन. बट क्या होता है, अमूमन जब भी कोई इस तरह के ऑफिसर्स आते हैं तो टैक्स पेयर्स घबरा जाते हैं. सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम. नाउ सर्च का मतलब क्या? टू अनहाइड समथिंग विच इज हिडन. सिंपल, कुछ छुपाई हुई चीजें हैं जिसे हमें निकालना है, दैट इज सर्च. सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि सर्च इज नॉट मियरली लुकिंग फॉर समथिंग विच इज ओपन. जो खुली हुई है दैट इज नॉट सर्च, बट व्हाट इज हिडन, जो छुपी हुई है, उसे ढूंढने के लिए सर्च की जरूरत है. अदरवाइज जो ओपन है उसके लिए तो इंस्पेक्शन काफी है. समथिंग विच इज ओपन एंड इजीली लोकेटेबल, दैट इज इंस्पेक्शन. उसके लिए इंस्पेक्शन करो. अगर आपको कुछ ढूंढना है, आपको लग रहा है कि वो छुपा के रखा उसने, in that case search is required. Okay, now let us go through the section. Proper officer not below the rank of joint commissioner. Again इसमें भी JC plus है, JC and above. Based on inspection carried out, based on inspection carried out or otherwise. अब लॉ ने यहाँ पे ओपन छोड़ दिया है. एक तो लिख दिया कि अगर आपने इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन के बाद में आपको अगर कुछ समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे और इंट्रूसिव जाने की जरूरत है, कुछ छुपाया हुआ है, एक ऑप्शन वो हो गया. और दूसरा, लॉ ने पूरा ओपन एंडेड छोड़ दिया और अदरवाइज कर दिया. इसका मतलब अब इसमें एवरीथिंग हैज कम. हैज रीजंस टू बिलीव, अगेन रीजन टू बिलीव. JC and above has to have reasons to believe that any goods liable to confiscation, confiscation के लायक जो goods हैं, कौन कौन से goods confiscation के लायक होते हैं? चलिए, goods with the intention to evade taxes, not unaccounted goods, supplies goods liable to tax without registration, contravenes the provisions of the act with intent to evade tax,
or uses conveyance as a means of transport for carrying goods in contravention of the act. So these are the various mechanisms under which basically confiscation is done. Okay, so has reasons to believe that any goods which are liable for confiscation or any documents, books, or things, three things, four things, let us say either confiscation or documents or books or things. Out of these four, whichever in his opinion is useful to any proceedings, that means if out of these four things he believes that any of these four are useful in the proceedings and are secreted in any place, and are secreted in any place, that means किसी भी जगह में छुपाई गई है, he may authorize in writing any officer to search and seize, or may himself do that. So what are the basic tenets of this search? First one, proper officer JC plus. Second, reasons क्या क्या हो सकते हैं? इंस्पेक्शन या कुछ भी, या तो इंस्पेक्शन के बाद में आप बोल दो या कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Has reasons to believe that confiscation, documents, books और things जो प्रोसीडिंग्स में काम आएंगे उनके, और वो छुपाई गई है, वो दे नहीं रहा है, उनको ये एप्रीहेंशन है, then in that case search can be done, and it can be done by any officer, any other officer. Authorization has to be done by the joint commissioner and above, and it can be done by any officer as such. Okay. Now the order for seizure has to be done in INS 02 139(2). Now we shall come to a more intrusive understanding of this section. Delhi High Court said that search without an invalid authorization is invalid. Okay. Conditions of a valid search warrant. Violation committed. It should contain violation committed. Search kahan hui, kahan hogi basically. Who is the authorized person for search with his designation and everything. And period of validity, 1 day, 2 day, whatever the case may be. Okay, so these are the basic contents of a search warrant. रीजन टू बिलीव. अब हम आते हैं रीजन टू बिलीव में. आप देखेंगे इंस्पेक्शन में और सर्च में दोनों जगह रीजन टू बिलीव बहुत जोर शोर से लिखा गया है. द एंटायर प्रीमाइज इज बेस्ड ऑन दिस वर्ड रीजन टू बिलीव. सो व्हाट इज रीजन टू बिलीव? अब ये दो शब्द आते हैं, रीजन और बिलीव. रीजन मीन्स वैलिड जस्टिफिकेशन ऑफ एन एक्ट. किसी भी चीज का एक वैलिड जस्टिफिकेशन अगर हमारे पास है तो दैट इज अ रीजन. नाउ बिलीव समथिंग दैट इज ट्रू. सो अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, रीजन टू बिलीव कर दे, इट सेज दैट देयर मस्ट बी अ वैलिड एंड रिलायबल जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्शन. एंड जो बंदा उसे मानता है, द पर्सन हु इज हैविंग रीजन टू बिलीव, he must actually believe it. Now I'll give you a situation that there is material in the hand of the joint commissioner that this person has evaded tax to the tune of 1 crore rupees, but he doesn't believe it. He says his officer that आपने ला तो दिया, इसके क्या बेसिस है? उसने बोला सर एक काम करो ना, आप सर्च ऑर्डर कर दो, निकाल तो बाद में लेंगे. ऑफिसर ने बोला नहीं, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, कुछ तो बेसिस होना पड़ेगा आपके पास. बोला नहीं, मुझे सुनने में आया कि इसने 1 करोड़ की चोरी की है. सो इन दिस केस this JC does not have a reason to believe. He is not believing. He is actually not believing, though he has been given some material. So in this case we can say that there is no reason to believe. But again, this is very subjective.
and very, very difficult to identify as to whether that person had a reason to believe in this case or not. Now, judicial precedences are there. Honorable Gujarat High Court said that it has to be based on intelligence, care, and deliberation. That means it is an exercise. It is not just a straitjacket or a simple thing. Reason to believe has to be very carefully crafted, though it is a subjective thing. Honorable Gujarat High Court, again, Golden Cotton Industries, it held that the court can examine the materials to find out whether an honest and reasonable person can base his reasonable belief upon such materials. That means, क्या एक honest or reasonable person can have a belief on that material? If अभी शाम हो रही है, मैं कहूंगा नहीं रात हो चुकी है. Can anyone accept it? No. So the reason to believe has to be logical. Though whether it is sufficient or not, that is a separate issue, and that is purely subjective. But the reason has to be logical. Allahabad High Court cannot go into the sufficiency of the reasons. I have already said that it is a subjective thing, and so court said that there has to be a reason, though it may be sufficient or non-sufficient, and it varies from person to person. So court will not go into the sufficiency of reasons. Yes, it can go into the logicality of reasons. That if the officer says that no, at 3:30 p.m. in the afternoon, it was night, so that the court will not accept. So it has to be logical, but may not be sufficient. Mere suspicion is not a reason to believe. If the officer says that I have doubt that you are evading tax, that is not a reason to believe. There has to be some material, and reason to believe should emanate from that material. Whether reason to believe should be recorded, yes, it should be. But whether it should be communicated to the SSE, no. Because it might hamper the case. If the reason to believe is given at the very initial stages of the investigation, it might hamper the case. But if the reason to believe is challenged by the SSE and the courts ask for the reason to believe from the officer, then he is obliged to give it. Okay. So now the answer to the question, what is difference between search and seizure? Search and inspection. Inspection, section 67.1, search 67.2. Now, inspection means verification, basic. I'll just target the first word, verification. And search means unearthing. Verification and unearthing. Verification of something that is open. Unearthing of something that is hidden or secreted. Only inspection and no coercive actions. No coercive action can be taken. He cannot touch. But under search, even coercive actions can be taken. Area, place of business. Under search, any place. Under search, whether any seizure can be made? No. Whether under inspection, sorry, and under search, whether seizure can be made? Yes. So these are the basic differences between search and inspection. And we see that inspection is less intrusive than search. Any queries? You may please go on. Okay, now let us understand. Sir, usually in inspections, people take the books of accounts, other documentation. In certain cases, they have taken the laptops also. Sir, if it is an inspection and if it is documented, then the officer is in problem. You can challenge it, though they will not return you the books, but yes, the officer will be in problem then. You understand one thing, na, sir? It means suppose they have visited our premises. Before that, I have a question, sir. Yes, please. Can I ask it at this stage?
Yes, because yes. it is relevant over here. Suppose I'm a businessman, you are a businessman, and I am your professional. Yes. Inspection team has arrived your office, and businessman calls us and he immediately starts saying, sir आप आ जाओ, immediately आ जाओ, दुनिया में कहीं भी हो आ जाओ. पहले तो मुझे ये बताओ सर, as professional, what are our मतलब responsibilities and regulations at that time? Yes. देखिए, in case of inspection हो या search हो, normally these officers have the tendency to call the chartered accountants of those people because they believe that business person कुछ दे नहीं पाएगा, ना कुछ हमें explain कर पाएगा. अगर उसका सीए आ जाता है तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. Easy हो जाए. उनका पर्पस वो रहता है इसके पीछे. और बिजनेसमैन भी चाहता है कि वो आ गया तो अपना सारा बर्डन उसके ऊपर दे दूं, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं उसी को बोलूंगा कि अब आप देखो. सो दोनों तरफ से वही कोशिशें बनी रहती है कि इनको बुलाओ यहाँ पे. अब जब हम वहां चले गए, सबसे पहली बात तो ये आपके ऊपर है, आप जाओ या ना जाओ. दे कैन नॉट फोर्स यू. लॉ में कहीं नहीं लिखा गया कि आपको जाना ही पड़ेगा. बट इसमें एक और एडिड क्वेश्चन है सर साथ ही, क्योंकि 93 मेंबर्स आर अटेंडिंग एंड आई वुड लाइक दैट दिस इज बीइंग आंसर्ड बाय यू. मैं जाता हूं, वो अलाउ नहीं करता. नहीं, वो तो उसकी राइट है सर. हाँ, डेफिनेटली वो ही वो मे उसकी और ही मे प्रेरोगेटिव नॉट है. अलाउ माय प्रेजेंस. वो उसकी प्रेरोगेटिव है. हाँ. वो क्वेश्चन बाद में है हमारे यहाँ पे कि वेदर a professional has a right to visit the premises of the searched area. He does not have any right. Okay. He may request the officer, and it is the prerogative of the officer to allow or not to allow. इसमें भी अब आगे सर मेरा मतलब मैं थोड़ा इसमें आपको थोड़ा और हम इसको ग्रिल करेंगे आराम से, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हाँ. पर्टिनेंट है और सबको हेल्प करेंगे. यस सर, बिजनेसमैन का कॉल आ गया या ऑफिसर का कॉल आ गया, मैं वहां पे चला गया. पहली बात तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे अलाउ करना ना करना उनका प्रेरोगेटिव है. अब होता गया है सर, यूजुअली लोकल ऑफिसर्स ही होते हैं, बहुत कम है टीम्स बाहर से आती हैं और आपस में रूटीन में मेल मिलाप पहले से ही होता है और वो लोग अपने प्रोफेशनल को अलाउ कर देते हैं. बट जो अलाउंस है सर, वो जुबानी जुबानी होता है. यू अंडरस्टैंड? दे डोंट इशू यू एनी लेटर कि आई अलाउ यू एज ए प्रोफेशनल टू एंटर द इंस्पेक्शन प्रेमिसेस. Yes. दिस इज ऑल वर्बल अंडरस्टैंडिंग विद द ऑफिसर्स की दे अलाउ योर प्रेजेंस. अब इसमें दो तीन चीजें हैं सर. सपोज कर लो मैं वहां 2 घंटे रहा और अगर उसने ऑफिसर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो वो टेक्निकली अपने आप अलाउंस बन गया. Yes. मतलब आप इसमें अगर इससे प्रेमिसेस में घुस भी गए तब भी वो टेक्निकली अलाउ, उन्होंने अलाउ किया तभी आप घुसे हो. यस, इसमें उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि होता तो ये वर्बल अंडरस्टैंडिंग से ही है कि वो हमें अलाउ कर देता है. सर वर्बल अंडरस्टैंडिंग है, प्लस वहां पे बहुत सारे विटनेस भी होंगे सर. हाँ, वहां पे बहुत सारे विटनेस भी रहेंगे. विटनेस भी रहेंगे. यू आर अलाउड देयर. यस डेफिनेटली. वो कहते हैं ना, हालात अपने आप बोलेंगे कि सच क्या है. यस. और अगर अगर आप वहां पे गए उनकी परमिशन के बिना, तो दे हैव द राइट टू कॉल द पुलिस. हाँ, दे हैव द राइट टू. और अगर उन्होंने नहीं किया तो डेफिनेटली इट मींस उनकी कंकरेंस थी उसको. उनकी कॉन्करेंस है तभी ना. हाँ, डेफिनेटली सर. दैट अब इज नॉट उसी एन से इशू हियर. हाँ, उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर. मैं चला गया या बिजनेसमैन है, अब उसको जब उन्होंने वारंट दिया तो हाउ कम ही नोज? बिजनेसमैन तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं कि वो 67(1) है या 67(2) है. और इट इज एन ऑर्डिनरी टेंडेंसी की इंस्पेक्शन में भी वो लोग किताबें और सारा कुछ उठा के लेके जा रहे हैं. नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम यही है कि उसी समय, मतलब हम जब कहते हैं ना कि हमें अपने राइट्स, अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए. यस. तो सर वही प्रॉब्लम है. अब इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे कोई भी ऑफिसर घुस जाओ ना, इंस्पेक्टर भी घुस जाओ, तो वो बंदा बेचारा डर जाता है. कॉमन पर्सन इज नॉर्मली थ्रेटेंड. वो डर जाता है कि कोई आ गया मेरे यहाँ पे और अब इसको कोऑपरेट करना है. चलो अब सर, वो उसने कोऑपरेट कर दिया, मैं पहुंच गया ऊपर से. मैं जाके उसको हाँ. कहता हूँ सर अपने सर्च वारंट की कॉपी दे दो. उसने मुझे कॉपी दे दी. कॉपी पे उसको ही इज ऑथराइज्ड अंडर 67(1). तो मैं उसको Yes. मना कर सकता हूँ सर आप बुक्स और वो नहीं ले जा सकते पंचनामा बना के. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव एवरी राइट. लेकिन उसका इफेक्ट ये होगा. दिस इज ए नोटिंग फॉर द मेंबर सर. 90 members are attending and I would like them to note it down that if you have to check the search warrant and if it is in 67(1) then you can deny that you cannot take the books of accounts
and laptops by preparing the Panchnama. यस, नहीं ले जा सकते। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि इफ ही हैज टू सर्च और इफ ही हैज टू सीज समथिंग, तो वो उसको तो सर्च उसी में समय, कन्वर्ट कर सकता है उसी वक्त। यस सर, यस सर, यस सर, वो उसी समय अपने सीनियर को बोलेगा कि सर आई हैव रीजंस टू बिलीव, ये मटेरियल आप लो, मुझे यहाँ पे समझ में आया है कि कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे, और आप अभी के अभी इशू करो। जैसे इनकम टैक्स में सर्वे के जैसे दौरान वो इनकम उसको टैक्स में सर्च में सर्वे से कन्वर्ट सर्च करा में सकता है। कन्वर्ट हो जाता है, हाँ हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकता है। दो देयर आर कोर्ट रूलिंग्स जिसमें कहा गया है कि आप उसे एक रीजनेबल टाइम के बाद करो। मगर क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना सर, हम सब जगह सही चीजें सोचते हैं कि एसएससी सही है, मगर अगर आप समझ लो एसएससी गलत है कहीं पर, और वो ऑफिसर उस समय वहां से निकल गया, तो उसने जो कुछ चीजें छुपाई हुई होंगी वो तो वो फिर हटा ही देगा वहां से। जब तक ऑफिसर और उसकी टीम वहां खड़ी है वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली एक और ऑथोराइजेशन मंगवाएगा फॉर सर्च एंड सीजर, जो कि उसके मेल में आ जाएगी या व्हाट्सएप पे आ जाएगी, और वो एक बार दिखा देगा और कहेगा हार्ड कॉपी आ रही है थोड़ी देर में, वो भी तुम्हें दे दूंगा मैं। और रीजन ऑफ बिलीव तो फिर वो बाद में प्रूव कर ही देगा। रीजन टू बिलीव तो वो यहाँ से दे देगा, मटेरियल भेज हाँ, देगा अपने सीनियर को, मटेरियल भेज देगा ऑफिसर। बट जैसे ही ये चीज करते हैं ना, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं, वो ऑफिसर वहीं ठंडा पड़ जाता है कि नहीं, यहाँ हम हर कुछ नहीं कर पाएंगे इनके साथ। उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है आपके ऑब्जेक्ट करते ही, चाहे वो उसमें सर्च कर ले फिर भी। तो वो सर this is उसमें the ना thing. थोड़ा मेरा ये कहना है, क्योंकि मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं, जो लर्निंग है ना सर, वो इसके गट्स देती है। व्हेन वी आर लर्नड इनफ और हमारा बेस स्ट्रॉन्ग और लीगली हमें सब कुछ पता है, तो फिर हम बड़े बोल्डली ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या होता है सर, हम चार्टेड अकाउंटेंट है ना, हम जानते सब हैं और जान सब सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उतना पढ़ते नहीं। डेफिनेटली, पास बिल्कुल होने के ठीक है बाद सर। अब कई सेमिनार्स में कहा जाता है कि सर सेक्शन मत पढ़ाओ, आप बोलो वर्बैटिम बोलो, उसमें मजा अलग आएगा। बट सर जब तक मैंने आज भी सेक्शन के एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि सेक्शन ही तो बेस है। आज अगर आपने कहा कि सर 67(1) में नहीं है, आप 60 आपने आपको तो 67(1) में ऑथोराइजेशन है, 67(2) में नहीं है। ऑफिसर ने अगर आपको पूछ लिया तो आप उसको समझाओगे कैसे? और आपको पता तो होना पड़ेगा कि 67(1) में क्या है और 2 में क्या है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एक तो सबसे ज्यादा खराब कर दिया इन दिनों में हमें, हम सबको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने। चीजें शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स में आ जाती हैं, दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि उतने 4 या 5 अक्षरों में सारी कहानी नहीं कही जा सकती, और उसमें छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं और हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। ओके, एनीवे यू कंटिन्यू अब सर। आते हैं, हाँ सर, अब हम डिस्कस कर रहे थे सीक्रेट, मतलब डिफरेंस के बारे में, कि सपोज एक ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आया, सर्च के लिए आया, बेसिकली 67(2) में आया। उसको ये डाउट था कि इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स छुपा के रखे हैं, या ऐसा करते कहते हैं कि उसने अपने स्टॉक को छुपा के रखा है यहाँ पे। अब ये जो बिजनेसमैन था ना, ये बहुत चालाक था, इससे लगा कि ये ऑफिसर तो आ गया है, और ये स्टॉक तो मेरे लिए छोटी चीज है, और एक चीज है जो छुपाई हुई है मेरी, अगर इसने सर्च कर ली तो वो निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको स्टॉक दिखा देते हैं। उसने क्या किया, ऑफिसर आते ही बोला सर ये रही मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये रही मेरी स्टॉक, सारी स्टॉक है ये देखिए, इसकी एंट्री अभी तक चढ़ी नहीं है, ये भी चढ़ा दूंगा। उसने क्या किया, उसने आते ही वो सामान दिखा दिए ऑफिसर को। तो अब सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन को समझिए सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। सेक्शन क्या कहता है, हैज रीजंस टू बिलीव दैट एनी goods liable to confiscation or documents, books or things are secreted in any place। वो बिजनेसमैन कहता है सर आप आए थे ये सोचकर कि मैंने छुपा रखा है कुछ स्टॉक, मगर देखिए सर कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है, यहां दिखा ही रहा हूं मैं तो, इट इज नॉट सीक्रेटेड।
सीक्रेटेड का मतलब, तो ऑफिसर ने कहा नहीं सर, आपने ये तो छुपाया, मगर आप और भी तो कुछ छुपा सकते हो, मुझे लग रहा है कि आपके पास और भी कुछ छुपाने की चीज है यहाँ पे। तो वह नहीं सर नहीं, ये पास्ट और प्रेजेंट ही है सीक्रेटेड वर्ड, इसमें कहाँ लिखा हुआ है लाइकली टू बी सीक्रेटेड, इसमें तो सिर्फ पास्ट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है। मैंने ना छुपाया ना अभी छुपा रहा हूं सर, आपको तो दिखा दिया मैंने, तो ये तो आपकी सर्च ही इनवैलिड है, आप चले जाओ। फिर ऑफिसर आता है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हमें दिखाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। दुर्गा प्रसाद, in this case law, the honorable supreme court has analyzed and interpreted the word secreted, and it says that it does not mean that it is secreted, it is basically already secreted, it means that which are likely to be secreted, जिसकी छुपाए जाने की आशंका है। अगर किसी चीज की छुपाए जाने की आशंका है, उसे भी सीक्रेटेड वर्ड में लिया जाएगा। So it covers past, present, and even future. So the word secreted cannot be interpreted in a narrow sense. It has to be interpreted in a very wide sense, with the taking cognizance of the intents of the law. Can residence of a taxable person be searched under section 67 subsection 2? Sir, can it be? Anyone who can reply? Can residence of a taxable person be inspected or searched? Yes, any place. Any place. Very correct. Any place. Any place. Even the place of his chartered accountant. Even the house of his staff member. Anything. Like in income tax, so in GST. Any place can be searched under section 67 subsection 2, but not in inspection. In inspection it cannot be. सर इंस्पेक्शन में आप उसको प्लेनली डिफाइन करोगे, क्या वो मेरे ड्रॉर सर्च कर सकते हैं इंस्पेक्शन? कैसे, क्या बोले आप? इंस्पेक्शन में मेरे टेबल के ड्रॉर सर्च कर सकते हैं? सर्च नहीं कर सकते, देख सकते हैं, वो आपको बोलेंगे खोलिए एक बार। और अगर मैं कहूँ उसकी कीज गुम गई? कीज गुम गई तब वो सर्च करेगा, तब वो आपने छुपा के रखी है। then it will have to be converted into search ना सर? यस यस यस, तब then आप he cannot open my drawer plainly under inspection. सर पावर ही नहीं है ना उसके पावर ही पास, नहीं। तोड़ने की पावर ही नहीं है इंस्पेक्शन में। सर्च की पावर पे हम अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट सबसेक्शन में है कि सर्च में पावर क्या क्या है। उस मैं पावर उससे में पहले ब्रेक चाहूंगा ओपन। सर, उससे पहले आप प्लीज, चाहे लिखा है पीपीटी में आपने चाहे नहीं, व्हाट इज द पावर अंडर इंस्पेक्शन वो जरूर बोलिएगा। बिल्कुल, हम उसमें आ रहे हैं, अभी हम सीक्वेंसली अब उसी में आ रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले फिर पावर में आ जाते हैं। ये रही, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैज द पावर टू seal or break open the door of any premises, break open any almirah, electronic devices, box, receptacle, in which any goods या तो सामान, accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such person, to such premises, almirah etc. is denied. तो सर आपने जो सवाल पूछा ना, उसका जवाब इस लाइन में है कि अगर आपने, ऑफिसर ने आपसे कहा कि आप इस ड्रॉअर को खोल दो, आपने कहा सर चाबी नहीं है, उसने बोला सर मंगवा लो चाबी, आपने बोला सर चाबी तो अब 4 दिनों तक नहीं मिलेगी, तो वो बोलेगा सर कोई इशू नहीं है, मैं इसको तोड़ देता हूँ, क्योंकि सब सेक्शन 4 में मुझे पावर दी गई है तोड़ने की, मैं तो आपके यहाँ पे 4 दिन तक बैठूंगा नहीं, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। सो इन दैट सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल आस्क यू टू ओपन इट, if you deny then he can break it. So they are very wide powers, he can do anything, he can break anything. Now
subsection C says that whatever things which have not been relied upon shall have to be returned. मतलब अगर वो काम की चीजें नहीं है तो वो उसे सीज नहीं करेगा, उसको 30 दिन के अंदर अंदर में रिटर्न बैक कर देगा, अगर कुछ भी सीजर उस तरह की गई है तो। ये पावर की बात हम समझ गए। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू पावर, यू मे आस्क इट ईदर नाउ और लेटर ऑन, नॉट एन इशू। यस, लेट्स कम टू सेक्शन सब सेक्शन 5 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इस तरह की क्वेरीज बहुत सारी आती है रिगार्डिंग एक्सट्रैक्ट्स, कि हम कॉपीज मांग सकते हैं क्या। मानिए उसने बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर ली, सो कैन वी आस्क एज अ मैटर ऑफ राइट कि आपको ये देनी पड़ेगी। सब सेक्शन 5 इसका जवाब देता है, वो कहता है कि द पर्सन फ्रॉम whom goods are seized, goods etc are seized is entitled to make copies or take extracts। या तो कॉपी कर लो पूरी या उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल लो इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। फाइन एनफ, क्योंकि अगर वो ऑथराइज्ड ऑफिसर वहां खड़ा नहीं रहेगा तो हो सकता है मैं उसमें कुछ ऑल्टरेशन कर दूं। एट सच प्लेस एंड टाइम एज द ऑफिसर में इंडिकेट। अब इसमें एक क्वालिफिकेशन डाल दी इन्होंने, except where making such copies or taking extracts may prejudicially affect the investigation। अगर वो एक्सट्रैक्ट लेने से या कॉपी बनाने से इन्वेस्टिगेशन प्रेजुडिशियली इफेक्ट हो सकती है, ये ऑफिसर का मत है, ये ऑफिसर की बिलीफ है, ये ऑफिसर की सोच है, इन दैट केस ही मे वेरी वेल डिनाई, इट इज हिज प्रेरोगेटिव। आप मांग सकते हो। यूजुअली अलाउ नहीं करते सर। यूजुअली अलाउ नहीं करते, मगर सर इसमें और एक बात है, कोर्ट्स की जजमेंट है, मैं इसी बात पे आ रहा था कि आप अगर किसी को मना कर रहे हो ना कॉपीज या एक्सट्रैक्ट्स लेने के लिए, तो उसके लिए भी आपके पास कोई वैलिड जस्टिफिकेशन होनी होगी। You have to have some justification why you are denying him। आपने उसको लेटर लिखी कि सर सब सेक्शन 5 में आप इसे रिलीज कर दो, रिलीज मत करो, मुझे कॉपी दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा मैं, मुझे लग रहा है कि इससे इन्वेस्टिगेशन प्रेजुडिशियली इफेक्ट होगा। फिर मैंने कहा कि सर ये जो आपने एक्सट्रैक्ट की, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट ली है ना, ये मेरी ही बनाई हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और ये मेरे रेगुलर रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। आप कैसे इसको रख सकते हो, और हाउ, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस विल अफेक्ट योर इन्वेस्टिगेशन। मैं तो ऑल्टर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो कॉपी ले रहा हूं, ओरिजिनल आप ही के पास है। व्हेन द ओरिजिनल इज विथ यू, the copies if I make, how can it prejudicially affect? So the officer has to explain, sir, he is duty bound, he has to reply। बस बात वही है, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर उसको रिप्लाई देना है ना, वो तो सिंपल यही रिप्लाई देगा कि बेसिकली आपको अगर हम ये एक्सट्रैक्ट देंगे देन इट विल नॉट बी गुड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, वो इस प्रोविजन को यूज कर लेगा। मगर जैसे ही आपने क्वेश्चन कर लिया ना, दैट टाइम ही हैज टू रिप्लाई, क्योंकि दैट इज चैलेंजेबल इन कोर्ट। अगर उसने रिप्लाई देने के लिए मना कर दिया, दैट केस यू कैन वेरी वेल गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट आफ्टर लुकिंग इनटू द सर्कमस्टेंसेस मे ग्रांट एप्रोप्रिएट रिलीफ। जो 67(4) में आपने लिखा था ना वर्ड्स, द इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स, हाँ, वो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल हु इज ऑथराइज्ड अंडर 67(2) के लिए पावर्स है, 67(1) के लिए नहीं है। नहीं 67(2) के लिए है सर ये। हाँ, क्योंकि इस पे मेंशन नहीं था तो मैं चाहता था ये कि मैंने शॉर्ट में लिखा है क्लियर सर, कर दो। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है सर, कि मेंबर्स को ये क्लियर कर दो कि ये पावर से 67(2) में है। ओनली 67(2) में ये पावर्स है, 67(1) में ये पावर्स नहीं है। 67(1) आपकी खत्म हो जाती है 67(1) में ही। 67(2) एंड बिलो आर फॉर सर्च, क्योंकि सीजर हो ही नहीं सकती इंस्पेक्शन में, तो उसका एक्सट्रैक्ट लेने की बात ही नहीं आ सकती, बात ही नहीं आ सकती। नाउ ये अगर हमें कोई गुड्स अगर सीज की गई है
तो उसे छुड़वाने की बात लिखी गई है कि कुछ पेमेंट करके इक्विवेलेंट अमाउंट की या बैंक गारंटी देके उसे छुड़वाई जा सकती है. दैट इज कंटेन्ड इन वन सबसेक्शन. Where no notice is given in respect of seized goods. अगर आपने सीजर कर लिया मगर 6 महीने तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, ऑफिसर साहब कुछ भी नहीं किया, तो उसे सारे गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे. मगर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि देयर इज सफिशिएंट कॉज कि हम इसे एक्सटेंड करें, तो वो और 6 महीने की मोहलत दे सकता है, मगर इसके ऊपर सीजर नहीं हो सकता. This is very clear. Now, these are provisions with regards to hazardous goods. रेनू जी बोल रही है 67(1) में पावर नहीं है, बट उन्हें ये पावर है कि वो तुरंत 67(2) के पावर एक्सेस कर ले, तो अल्टीमेटली तो उन्हीं की चलनी है. वेरी करेक्ट मैडम. दे हैव द पावर एंड दे कैन डू दैट. सर प्रॉपर ऑफिसर इन प्रोविजो 7 इज ऑलवेज जेसी एंड अबव, क्योंकि ऑथोराइज वो कर रहे हैं तो उससे नीचे का ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता. ये पेरिशेबल एंड हैजार्डियस गुड्स के बारे में है. सबसेक्शन 10 कहता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर अप्लाई होता है सर्च के केस में, एंड कमिश्नर पार्टेक्स द रोल ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन दिस केस. नाउ एक सिचुएशन में हम आते हैं. आप ऑफिसर के पास गए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी कुछ एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर, उसने कहा कि आप ये लेके आओ और we'll check it. If the goods are perishable and damaged, and these damaged, who is liable? Is there any maximum number of days for conducting search in any premises? Sir, search conduct करने की कोई maximum number of days as such नहीं है. वो जब तक उन्हें सही लगेगा, and it has to be justified. आप 10-10 दिनों तक ऐसे ही जाके नहीं बैठ सकते कि भाई खाली बैठे हैं, कोई बहुत बड़ा महल है वहां पे वो लोग सर्च कर रहे हैं, मन लग गया तो हफ्ते भर रुक जाओ यहीं पर. वैसे नहीं कर सकते. देयर हैज टू बी अ रीजन कि वो सर्च में इतने दिनों तक वो क्यों रुके हैं. सो दो लॉ हैज नॉट गिवन एनी टाइम लिमिट, बट एवरीथिंग इज इन लॉ इज लॉजिकल. यू कैन नॉट ब्रीच द बेसिक टेनेट्स, सो दोज हैव टू बी फॉलोड. If goods are damaged, then who is liable, sir? Basically, if goods are damaged, liable कोई नहीं रहता है सर. इसमें प्रॉब्लम बस यही है, प्रॉब्लम आपकी है. आप ऑफिसर को जाके कुछ नहीं बोल सकते हो. हाँ, अगर ऑफिसर ने बहुत हाई हैंडेड मैनर में डील किया है केस को, और आपने नेसेसरी इंटीमेशंस दी है उनको, और कोर्ट अगर उसमें एक्सेप्ट कर लेता है आपकी उस प्ली को, देन यू कैन गेट एनी रिलीफ. अच्छा, आप गए ऑफिसर के पास टू से दैट सर आप ये केस की असेसमेंट कर दो. ऑफिसर ने कहा कि सर ऐसा करो, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओ. आप लेकर गए. ऑफिसर ने कहा हो मुझे तो ये डॉक्यूमेंट्स उस दिन मिले नहीं थे, एक काम करता हूं मैं इसे भी सीज कर लेता हूं. क्या वो कर सकता है? कैन ही डू दैट? किसी का जवाब आ जाता तो अच्छा था इस पे. कैन ही डू दैट? आप गए उसी के ऑफिस में आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सर्च, और उसने उस डॉक्यूमेंट्स को रख लिए. कैन ही डू दैट? यस. नमन जी कहाँ कर सकते हैं वो, कैसे कर सकते हैं आप बताओ. चलो आई टेल. आ जाइए सबसेक्शन 11. Where the proper officer has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of any tax, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers, or documents of such person produced before him, and shall grant a receipt of the same,
and shall retain the same for so long as may be necessary in with any proceedings or the rule made there for prosecution. So in this case, officer, if he feels that these documents are required by me, he can seize. But now there is one interpretational issue. This subsection 11 is within section 67 and it relates to inspection, search and seizure. Inspection, search and seizure. So my question to you all, it is just an interpretational issue, that whether this seizure under section 11 can be done in any case other than search cases also. मतलब जिस केस में 67(2) नहीं हुआ, क्या उस केस में भी ये 11 की पावर इन्वोक की जा सकती है? You got my point? This section is basically on search and seizure and inspection. Now, when this provision is under this section, can this seizure power be invoked by the officer in cases other than search and seizure and inspection? Can it be done? Yes, no, no, yes. अच्छा, तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि की जा सकती है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं की जा सकती. ये डिस्प्यूटेड एक इंटरप्रिटेशन है. दो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जाए, समझी जाए, तो क्योंकि ये सर्च एंड सीजर से रिलेटेड है और इसकी जो शब्दावली है, द लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन सेज दैट for any reason, basically it does not link it to subsection 2 or subsection 1. अगर वो इंटेंट होती ना, तो any person inspected or searched under subsection 1 or 2, कुछ उस तरह की लैंग्वेज लिखी जाती. इसमें थोड़ी जनरलाइज की गई है कि कोई भी अगर अटेम्प्टिंग टू इवेड है तो सीजर, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सीजर. इसमें सीजर की पावर एक ऑफिसर को दी गई है. बट देयर आर कॉन्ट्ररी व्यूज ऑल्सो which says that सिर्फ सर्च केसेस में इसको सीजर की जा सकती है. Okay. Subsection 12 says that a commissioner or any officer authorized by him may, मतलब अगर वो कुछ सर्च करने जा रहे हैं तो वो पहले उस दुकान में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे. उनको अगर डाउट है कि ये इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं सही से, they will purchase goods from him and then they will catch him, they will trap him basically. ट्रैप बिछाने के लिए this section gives him the power to purchase goods officially. परचेज करने के बाद जब उन्होंने ट्रैप बिछा लिया, हो गया सब काम, then it says that the taxable person has to take back the goods after cancelling the invoice as per law and return back the money. So this is the basic provision. Can a officer call CA at night and retain him at the place for a night? No, retain तो कर ही नहीं सकते हैं सर. आप अपनी मर्जी के मालिक हो. जब उन्होंने आपको बुलाया है, पहली बात तो आप जाओ भी या नहीं जाओ, दैट इज ऑल्सो योर ओन प्रेरोगेटिव. आप नहीं जाना चाहते हो तो आप वेरी वेल नहीं जा सकते हो. दे कैन नॉट फोर्स यू. बट जाने के बाद वो आपको रोक सके, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्च इज नॉट ऑन यू, इट इज ऑन द टैक्सेबल पर्सन. वो टैक्सेबल पर्सन को नहीं जाने देगा, बट आपको नहीं रोक सकता. दो हाई हैंडेडनेस के केसेस होते रहते हैं, मगर लीगली अगर आप देखो तो इट इज नॉट टेनेबल एंड इट इज नॉट करेक्ट. सर अगर उसने सीए की प्रेमिसेस की परमिशन भी ली है तो? सर दैट इज ए सेपरेट इशू. सबसे पहले तो सीए की प्रेमिसेस की परमिशन वो लेगा कैसे सर? मतलब उसे तो उस समय ये रीजन टू बिलीव होना होगा कि सीए के प्रेमिसेस में कुछ सीक्रेटेड है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो वहां छुपाए हुए. वो ओपिनियन बना के ऐसे ही चला जाएगा, उसे परमिशन की क्या जरूरत है? अगर उसने ओपिनियन बना ली कि भाई इसके सीए के पास कुछ है, इफ बुक्स आर केप्ट एट सीएस प्रेमिसेस सर, तब तो होना ही है. तब तो आप भूल जाओ. मतलब तब तो इंस्पेक्शन भी हो सकता है. हाँ. सर तो दूर की बात. तब इंस्पेक्शन सर्च दोनों हो सकते हैं. हाँ दोनों हो सकते हैं. तो आपने खतरा बुला ही लिया अपने पास.
और होना ही है. It has to be done as per law. It should be done rather. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके हित मेंटेन होते हैं तो. Powers of officers in the inspection, only inspect, not seize. Powers of officers in the search, these are the powers. मगर यहाँ पे एक बात लिखी गई है, ध्यान रखना है हमें कि वो तोड़ तभी सकते हैं अगर डिनाई किया जाए तो. बिना डिनाई किए अगर तोड़ने तोड़ाने में आ गए तो दैट इज इलीगल. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैकअप. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नमन जी, documents or backup of computer नहीं, books of accounts तो books of accounts is a very wide term. It contains many things. डॉक्यूमेंट्स तो अलग कैटेगरी है ही ना उसके लिए. और आप अगर आप सीए के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पास तो ये ऑप्शन है ना कि इफ एनीथिंग इज सीक्रेटेड देयर, डॉक्यूमेंट्स भी अगर है कुछ सीक्रेटेड तो वो भी तब भी वहां पे जा सकता है. यस. अब एक चीज हम इसमें समझते हैं. आपका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है एसजीएसटी और आपके पास सर्च आ गई डीजीजीआई की या सेंटर की. वेदर इट इज अलाउड, वेदर इट इज लीगली अलाउड. अलाउड. ओके, ठीक है. हम समझते हैं, इसके हिस्ट्री को समझते हैं. सेक्शन 6(1) और सेक्शन 6(2) ये दो प्रोविजंस कंटेन करते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट के बारे में. अब अगर हम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स को देखें तो देयर वर डेलिब्रेशंस. सबसे पहले डेलिब्रेशन हुआ कि भाई 1.5 करोड़ के नीचे के केसेस को आप रख लो, 1.5 करोड़ के ऊपर के केसेस को हम रख लेंगे. ऑन दैट बेसिस सम डिविजन्स वर मेड ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स. देन लेटर ऑन 21वीं मीटिंग में कही गई कि भाई क्रॉस एम्पावरमेंट भी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की केस में हम अलाउ करेंगे और इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा. सेपरेट नोटिफिकेशन विल बी इशूड कि कौन कौन से सेक्शंस में क्रॉस एम्पावरमेंट अलाउ होगी. सर्कुलर आ गया क्रॉस एम्पावरमेंट का, उसमें नोटिफिकेशन की बात लिखी गई. एक क्रॉस एम्पावरमेंट की सर्कुलर आई जो कि आई सेक्शन 54 के केस में रिफंड. इन रिफंड देयर इज क्रॉस एम्पावरमेंट. However, for all other sections, there is no formal notification for cross empowerment. कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है. However, एक लेटर इशू किया गया था जीएसटी की, सीबीआईसी की तरफ से, जिसमें कहा गया था, अपने ऑफिसर्स को उन्होंने लेटर इशू किया था कि भाई जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग के आधार पर यह डिसीजन किया गया था कि इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन में क्रॉस एम्पावरमेंट है तो आप भी अलाउड हो और वो लोग भी अलाउड है. So this is a letter DOF number CBEC 204301/2017. But my contention is whether a letter can substitute a notification, whether a letter can partake the role of a circular. I can say a big no. But when we see the court rulings, courts are basically ruling in favor of cross empowerment. So we cannot say that cross empowerment does not exist. Cross empowerment is there, though there are some legal lacunas as per my understanding and as per the understanding of many other people, but still cross empowerment is there. If books are maintained, there is a question, Ashok JNG, if books are maintained on online software or cloud, say no to access his server. सर अगर क्लाउड में मेंटेन हो रही है ना तो he has to provide access. अगर वो एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है फिर वो क्लाउड वाले को कांटेक्ट करके ऑफिशियली वहां से एक्सेस ले लेगा.
सो यू कैनॉट से दैट, एक्सेस तो देनी होगी. Now let us come to, we have less time, so we shall try to do it faster. Whether search can be conducted at place other than registered place. राजीव ट्रेजर्स के केस में कोर्ट ने कहा था that there is no warrant to restrict the meaning of these words to only undisclosed place of business. So it can be done at any place. Only place of business होना जरूरी नहीं है. It can be done at any place. क्योंकि अगर उसे छुपाना है ना, तो वो कोई नोन जगह पे नहीं छुपाएगा, वो किसी अननोन जगह पे ही उसे छुपाएगा. कैन पुलिस हेल्प इन सर्च? क्या पुलिस की मदद ली जा सकती है? यस, द हेल्प ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिसर कैन बी टेकन ड्यूरिंग सर्चेस. नाउ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस परेश नथालाल, उसमें गुजरात हाईकोर्ट ने ये एक बहुत सुंदर राइट अप दिया. उसमें उन्होंने कहा एक्चुअली हुआ क्या कि एक कांस्टेबल को 4 दिन 5 दिन तक घर के बाहर खड़ा कर दिया ऑफिसर्स ने. उसकी मंशा शायद ये रही कि उन्हें शर्मिंदा करना. वो जो टैक्स पेयर था, अगर उसके घर के बाहर में एक पुलिस ऑफिसर 3 से 4 दिन तक खड़ा है, तो दैट मीन्स उसे समाज में शर्म का सामना करना पड़ रहा था. तो उस तरह से वो इंटिमिडेट हो रहा था. तो जब उसने कोर्ट पे इसकी अर्जी लगाई, तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपने किसी पुलिस ऑफिसर की सहायता ली है, तो देयर हैज टू बी अ रीजन, आपने क्यों ली. आप सिर्फ किसी को शर्मिंदा करने के लिए पुलिस को नहीं बुला सकते. अगर वहां के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, आपके कहे मुताबिक आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, you need not call a police officer, and the police officer so called is wrong. So the court has very rightly observed in this case. Whether statement can be recorded, अब इस सवाल पे आते हैं हम लोग, which is very important. Do inspection mention details of place of search? सर वो उस समय उसे डिसीजन लेना होगा. एक प्लेस ऑफ बिजनेस तो उसमें लिखा हुआ रहता है, वहां से सर्च में अगर उसे फर्दर कुछ हो रहा है तो ही कैन गो देयर. नाउ अब हमारे पास एक मेन सवाल आया, जितनी भी सर्चेस हो रहे हैं, मैक्सिमम सर्चेस में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा रही हैं सर्च के एंड में. सो कैन सर्च बी, वेदर अ स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग सर्च? सर सवाल का जवाब दीजिए कोई. वेदर अ स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग सर्च? Whether a statement can be recorded during search? क्या सर्च में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है? नो. नो आपने कैसे कहा? मैक्सिमम केसेस में तो रिकॉर्ड हो रही है. कौन से सर्च के केस में रिकॉर्ड नहीं हो रही है, आप मुझे ये बताइए. मैंने आज तक जितने भी सर्च केसेस देखे, इन ऑल केसेस देयर हैज बीन रिकॉर्डिंग ऑफ दिस थिंग, स्टेटमेंट. सर सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 को अगर हम लोग ध्यान से देखें, चलिए मैं आपको 67 सबसेक्शन 2 तक लेके जाता हूं. हमने एक समरी बनाई थी एकदम स्टार्टिंग में. वो समरी में जाते हैं, उससे आप इजीली समझ जाओगे. यस, आप यहां देखो सर, कहीं पर भी स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है? देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट इन सेक्शन 67.
Deepa ji, I'll definitely reply to you. Okay, so there is no provision for recording of statement under this section. So where is the provision power given? क्या बिना recording of information के statement के search हो जाएगी? Law says that law gives one more provision, that is section 17, section 70, power to summons. So summon gives the power to the officer to call the SSC or call the taxpayer and ask questions from him, take evidences from him and record his statement. But यहां पे क्या हो रहा है? विदाउट एनी समन्स, कई केसेस में स्पॉट समन्स इशू किए जा रहे हैं, स्पॉट समन इशू करके स्टेटमेंट लिया जा रहा है, और कई केसेस में बिना किसी समन के ही स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, which is illegal and which is not correct. Courts have held that even in case of summons, a proper time should be given. Proper time should be given. It is not that कि अभी मैंने summon issue किया and within 15 minutes you have to reply. No, there has to be a proper time given to the taxpayer. So the proper procedure will be to issue a summon notice, call him after search. Search का मतलब क्या है? सिर्फ अनर्थ करना, कुछ निकालना. आप सर्च करो, आप लेके चले जाओ. मगर रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट हो रही है, सेल्फ विटनेस बनाया जा रहा है एंड पेमेंट्स करवाई जा रही है, स्पॉट पेमेंट्स DRC 03 क्या कराई जा रही है. सो दोज आर द इश्यूज. अब एक और इशू हम डिस्कस करते हैं. मानिए सर्च हुई, समन भी हो गई, चलिए उसने प्रोसीजर भी फॉलो कर लिया, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया प्रेशर में उसी समय कि हाँ मैंने टैक्स चोरी की है. अब क्या वो उसे रिट्रैक्ट कर सकता है? वेदर ही कैन रिट्रैक्ट द स्टेटमेंट, इसका जवाब दीजिए. Whether statement given before a GST officer can be retracted. Okay, saying that he has given the statement under pressure. Okay, yes, retract कर सकते हैं. मेजॉरिटी व्यू नहीं, सर्वसम्मति से यही व्यू है कि रिट्रैक्शन किया जा सकता है. मगर मैं अगर कहूं कि इतना आसान नहीं है, तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हम कानून के प्रावधानों को देखेंगे तो एनी स्टेटमेंट गिवन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर cannot be taken as an evidence. पुलिस ऑफिसर के सामने अगर किसी भी तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो वैलिड नहीं माना जाता, एक्सेप्ट इन सम स्पेशल लॉज. एविडेंस एक्ट इज वेरी क्लियर, क्योंकि वो मार के डर से उसने कुछ भी लिख दिया. मगर क्या GST ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है? इज द GST ऑफिसर अ पुलिस ऑफिसर? नो, a GST officer is not a police officer, and thus the statement given before him can be produced as an evidence also. अब रिट्रैक्शन कैसे हो सकता है? उसने जोर जबरदस्ती से ले लिया, उसको रिट्रैक्ट कैसे करे? मान लीजिए उसने कह दिया कि हाँ टैक्स चोरी हुई थी. अब 2 दिन बाद उसे समझाया गया तुमने क्यों किया, तुमने तो टैक्स चोरी नहीं की थी, अब रिट्रैक्ट करो. तो उसने एक सिंपल लेटर लिख दिया कि मैं रिट्रैक्ट कर रहा हूं, मुझसे प्रेशर में लिया गया. तो क्या ये रिट्रैक्टेबल है? नाउ देयर आर 2 आंसर्स. सबसे पहला, हो सकता है कि उसे अलाउ कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा कि चलो ये आपने सफिशिएंट टाइम में आपने इन्फॉर्म कर दिया.
दूसरा, कोर्ट कहेगा कि क्या प्रूफ है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया वो सही था गलत था, आप उसको कोलैबोरेट करो। मैं जो बातें कह रहा हूं ना, ये सब कोर्ट जजमेंट्स के बिना पे कह रहा हूं। दीज थिंग्स आर कवर्ड इन वेरियस कोर्ट जजमेंट्स। Courts have said that statement before a GST officer or a customs officer who is not a police officer is legally binding. But if the retraction is done within a reasonable period of time and if it is supported by corroborative evidence that the retraction is that the statement was given under duress, the retraction can be accepted. So various court judgments are there, and I have mentioned these judgments here. All these judgments are there. The Honorable Supreme Court has said the customs officials are not police officers. The confession, though retracted, is an admission and binds the petitioner. It is very clear. So we have to be very judgmental and very cautious in giving statements. If Because summons one have more thing, not, sir. if summons have not been given for before taking statement, whether that could also be the base for retraction Sir, along with other things. मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं उस पे आ रहा हूँ। आपने जो सवाल किया मैं उस पे ही अभी आऊंगा इसके बाद में। तो एक चीज और हमें समझनी है, आप किस प्रेशर में स्टेटमेंट दे रहे हो। Why should we give a statement under pressure when you have a fundamental right that you cannot be a witness against yourself? Customs officer तो मार भी नहीं सकता, he cannot raise his hands, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर भी नहीं है। तब क्यों प्रेशर में आते हैं हम? नो अगेन, वो लोग इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो बंदा बेचारा खुद ही प्रेशर में आ जाता है कि अगर अभी मैंने साइन नहीं किया तो शायद मेरे जीवन खत्म है। सो आई थिंक टैक्स पेयर्स नीड टू बी एजुकेटेड, प्रोफेशनल्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट गलत स्टेटमेंट जो कि सेल्फ सुइसाइडल है, उस तरह की स्टेटमेंट्स कभी नहीं देनी चाहिए जीएसटी में, कम से कम, क्योंकि दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रैक्ट एट अ लेटेस्ट स्टेज। अब सर का जो सवाल था पहले उस पे आ जाता हूं, फिर मैं दूसरे में आता हूं। यस, एविडेंस कलेक्टेड इन इलीगल सर्च। सर ये आपके सवाल का जवाब था। वेदर एविडेंस कलेक्टेड इन इलीगल सर्च कैन बी चैलेंज्ड। सर्च वारंट के बिना उसने सर्च कर ली और सीजर कर लिया, स्टेटमेंट ले लिया। स्टेटमेंट में सामने वाले ने लिख दिया कि हाँ टैक्स चोरी हुई है, इतनी की हुई है, यहां से आईटीसी ली थी फेक, ये हुई थी वो हुई थी, सब लिख दिया उसने कहानी। अब बाद में उसने सोचा ये कोई इशू नहीं है, इसने तो सर्च वारंट लाया ही नहीं, मैं बाद में से इलीगल बोल दूंगा, अभी लिख दो इसको, भेजो यहाँ से। बाद में वो गया, उसने कहा सर आपकी तो सर्च इलीगल थी, एक काम करिए, जो आपने देखा कह दो नहीं देखा, जो मैंने लिखा कह दो नहीं लिखा। क्या मान्य होगा? सर इसमें पोजीशन ये होगी कि उस ऑफिसर के अगेंस्ट में जिसने सर्च की, उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, होगा नहीं होगा वो भी श्योर नहीं है। मगर आपकी जो चीजें पकड़ी गई और आपने जो स्टेटमेंट दिया वो तो सत्य है, डिपार्टमेंट उसे यूज कर सकता है। तो आपकी स्टेटमेंट भी जो दिया वो तो आपने कोई मजाक में नहीं दिया ना, इट इज सीरियस। So that cannot be retracted, that cannot be termed to be illegal. अब एक और सवाल आता है, whether cash can be seized during search। क्या कैश को सीज किया जा सकता है? whether cash can be seized, सीजर में क्या क्या लिखा गया था? goods liable for confiscation, documents
थिंग्स और बुक्स, ये 4 चीजें थी। क्या इज कैश गुड्स? इज कैश अ डॉक्यूमेंट? इज कैश बुक्स? ये तीनों कैटेगरी में तो नहीं आती है। तो क्या कैश थिंग है? इज कैश अ थिंग? आइए, कोर्ट ने क्या कहा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। In the considered opinion of this court, a conjoint reading of these sections makes it clear that money can be seized by officer as it comes within the definition of thing. ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मिसचीफ in the language cannot be allowed and it has to be interpreted in a concerted manner. Arvind Goel versus Union of India, it says that cash does not fall within the definition of goods. It is difficult to accept that cash could be termed as a thing useful or relevant for proceedings under the GST Act. So courts have divergent views on this issue. But अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, डिपार्टमेंट की ये व्यू है इसमें कि हम कैश को इसीलिए सीज कर रहे हैं बिकॉज दैट इज द प्रोसीड्स ऑफ इलीगल सेल एंड दैट कंटेन्स अ पोर्शन ऑफ आवर टैक्स। तो हम अपने टैक्स को सेव कर रहे हैं, बट वेदर इट इज अलाउड अगेन डिस्प्यूटेड। बट प्रॉब्लम क्या होती है, सर्च के समय आप कुछ नहीं कर सकते, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे विल डू। वेदर implications on erring officers, no such provisions, कोई प्रोविजन नहीं है ऑफिसर ने अगर कुछ गलती कर दी तो। और सेक्शन 157 उन्हें इम्यूनिटी देता है कि अगर आपने गुड फेथ में कुछ भी काम कर दिया, चाहे गलत ही क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप काम करते जाओ, कर्म किए जाओ। अब if the action of the officer is very much high-handed and it is apparent, then it cannot be said to be in good faith. अब अगर उसने बिना सर्च वारंट के सर्च कंडक्ट कर दिया तो उसमें गुड फेथ कैसे कहा जा सकता है? वो कहेगा नहीं मेरे को लगा यहाँ पे चोरी हो रही है तो मैंने टैक्स की सलामती के लिए मैं वहां पे सर्च मार दिया मैंने अपने आप ही, तो दैट इज नॉट गुड फेथ, सो दैट इम्यूनिटी ही शुड नॉट गेट। This is another case law. Can premises be sealed during search? It can be sealed. But अब अगर एक सिचुएशन आती है, जैसे एक गोडाउन है मेरी, मैंने उस गोडाउन में 5 लोगों को रेंट देके रखा है और उसमें मेरे भी गुड्स हैं, तो क्या अब पूरे गोडाउन को वो ऑफिसर बंद कर देगा? वेदर इट शुड बी डन, क्योंकि मेरी गोडाउन, मेरे तो गुड्स वहां पे है, ठीक है, इट इज लायबल फॉर सीजर, मगर क्या 5 और लोगों के भी गुड्स वहां पे सीज होने चाहिए? नाउ दैट इज द इंटेलिजेंस विच द ऑफिसर शुड अप्लाई। लीगली ही शुड नॉट डू, एथिकली ही शुड नॉट डू। उसे गुड्स को सीज कर देने चाहिए। he should seize the goods in a manner that it cannot be removed and the godown should be kept open in such circumstances. इवन ऐसे भी गोडाउन को सील करने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि उसके बिजनेस वो बंद नहीं कर सकता। जो गुड्स उस दिन मिले उसको सीज किया जा सकता है, वो नए गुड्स खरीद के नए बिजनेस तो स्टार्ट कर ही सकता है। One thing please keep in mind that search and seizure operation cannot stop the business of the SSE. SSE's business cannot be halted. आपको गुड्स से प्रॉब्लम है, उतने गुड्स को आप सीज कर दो, मैं नए गुड्स अभी खरीदूंगा और अभी बेचूंगा। दे कैन नॉट डिनाई यू। कॉपी ऑफ सीज्ड मटेरियल्स के कुछ केस लॉज हैं। कलेक्शन ऑफ पोस्ट डेटेड चेक ड्यूरिंग सर्च, ये भी प्रैक्टिस रही है कि सर्च हो गई, मानिए 50 लाख की डिक्लेरेशन हुई, टैक्स पेयर ने कहा अभी तो मैं दे नहीं सकता हूं, पैसे हैं नहीं, तो कहा एक काम करो आप एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो, हम पोस्ट डेटेड चेक रख लेते हैं आपके नाम से।
और आपने नहीं दिया तो हम इसे बाउंस करवाएंगे with a declaration. So courts have said it is not allowed and it is wrong. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे. There was an instruction issued by the CBIC regarding search cases. Basically SOP which should be followed by the departmental persons. There should be reasons. DIN होनी चाहिए. INS should have the DIN. Please keep in mind. If the warrant has been issued in the name of some other person, then the name of such other person, then raid is to be made to some other person, then the warrant has to be changed. If a case arises wherein the person who is to be searched is dead, then what can be done? मानिए वो सर्च करने गया वहां पे और कहा गया कि नहीं वो बंदा तो मर गया. अब it is a proprietorship firm. Now what is to be done? Now what is to be done? क्या वो कंटिन्यू कर सकता है सर्च को? Friends, he can continue provided he gets the warrant changed in the name of his legal heirs. उसे अपने उसके लीगल हेयर्स के नाम पे चेंज करवानी होगी. अगर रेसिडेंस में सर्च हो रही है तो लेडी ऑफिसर हैज टू बी देयर. देयर हैज टू बी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस और पंचर्स who are respectable citizens, inhabitants. Respectable means anyone who is not convicted is respectable. There is no such definition. Officers conducting search shall identify themselves and personal search should be there. They have to show their I-cards and they should say that you can search us. We have not bought anything with us which can harm you. Authorization should be there. Panchnama should be there. List of all goods, documents recovered and seized should be listed. Copy of Panchnama should be signed. Each page should be signed by the officer and by the owner, and copy should be given to him. And officers should leave the premises immediately. They should not wait. Now, can a search before can a writ be filed for search? Consequences if search is invalid, we have already discussed. Whether payment can be refunded, whether statement given is admissible. I think we have discussed most of the points here. Payment, it can be refunded. There are court judgments wherein court has asked to refund the case in case of high-handed search. Whether statement given is admissible, it is admissible. Can writ be filed? Yes, after search, writ can be filed. And relief, it depends upon the case, particular case and basically views of the Honorable Court. No recovery, basically it says that recovery cannot be made at the time of search and it has to be voluntary. Refusing to answer, public servant authorized to question. If the taxable person says that I will not answer, I have the right to remain silent, that is wrong. Because if he has been asked a question which he knows, he should answer. Otherwise, it will fall under this section of IPC. False statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to administer. False statement is again an offense under IPC. Power to arrest. This is the most threatened section, and it is because of this threatening that most of the searches are successful. However, there are many formalities and many things which need to be done by the department before arresting a person, and it is not such an easy job. So basically my submission will be that though the law gives very wide powers to the officers and the department
in cases of search, but it is upon us to analyze as to how we should protect our clients, how we should advise our clients, and how we should basically explain the situation to our client so that high-handed searches are avoided and can be dealt with in a better manner. So if any questions are there, I will be happy to answer. Vikas Golji sir, एक बार please cross check the questions if the member have asked. So the questions in the chat box have already been answered by the speaker. Now we once again request the members that if they have any questions relating to the topic, they can forward the same in the chat box. Meanwhile, sir, for the members, there is a small discussion on the stocks. Usually inspection team visits, they people are very few in number, 4 or 5, and stocks are huge and huge and huge in the units. They just take, you can say 2 or 3 hours, make a stock sheet. Businessman भी बेचारा उतना की knowledgeable होता है, वो एक एक डब्बे के अंदर 3-3 पीस होते हैं, वो डब्बे गिना देते हैं, उसके बाद वो डब्बों की काउंटिंग कर लेते हैं, एक स्टॉक शीट बन जाती है, बिजनेसमैन साइन कर देता है. अनफॉर्चुनेटली कई बार हमने देखा है प्रोफेशनल भी यंग होता है, उसको भी इतनी नॉलेज नहीं होती. मैं कहता था उस एस्पेक्ट से एक बार आप, क्योंकि मेंबर स्टिल 72 मेंबर्स आर देयर, तो आप उस एक एस्पेक्ट को जरूर थोड़ा 2-4 मिनट ब्रीफ कर दो सर. Yes, yes, yes. बिल्कुल सही बात आपने कही. In case of stock taking, there is also a judgment which I have not quoted here. It says that basically in case of searches, you are very right कि अब अगर मानिए 20 करोड़ की स्टॉक है, हाँ, 4 घंटे में वो कहाँ से काउंट हो गया. या मेडिसिन का केस ले लो, ग्रोसरी का केस ले लो. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इंस्पेक्ट एक एक आइटम कि इतने कम लोग उसको कर पाए. सो अब जब स्टॉक टेकिंग हुई, देखिए सबसे पहले हमें अपने बारे में पता होना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं. अगर हमें पता है कि हमारे इतने की स्टॉक है और ऑफिसर उसे ओवरस्टेट कर रहा है, तो आप उसी समय ऑब्जेक्ट करो कि सर आपने जो भी मैकेनिज्म अप्लाई किया इसको स्टॉक टेकिंग करने का, ये आपकी जिम्मेदारी है स्टॉक टेकिंग की. ये स्टॉक मेरे हिसाब से ओवरस्टेटेड है, आप इसे फिर से वेरीफाई करो. और जब तक आप एग्री नहीं करोगे, ही हैज टू प्रोड्यूस बिफोर यू ना, कहां से कितनी, अगर एडिशनल स्टॉक है तो आप सीज कर लो सर, बट यू हैव टू प्रूव मी कि एडिशनल स्टॉक है. सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एसएससी को खुद को भी नहीं पता होता कितना स्टॉक है उसके पास. But one should be vigilant enough to sign the sell stock. Yes, because सारी फाइट ही उसके ऊपर है. क्योंकि स्टेटमेंट आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो सर वेरी इजीली. एक क्वेश्चन आई थी, इन केस a CA conducts audit of a client, then in that case it is obvious that he must be having backup of computerized data up to a then in हाँ सर, इसमें क्या होता है ना, सपोज ऑडिट हम लोग करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी भी रहती है. तो अगर आप वो बिजनेसमैन जो है, इफ ही इज नॉट अलाउइंग access to the books of accounts, then in that case the officer may ask the chartered accountant, or he may go to the place of the chartered accountant and take copies of whatever documents he has pertaining to that taxable person from the chartered accountant. So that authority he has. However, in case of inspection I will differ. वो तभी होगा अगर वहां पे मेंटेन हो रही है. तो अगर सिर्फ एक कॉपी है तब वो वहां पे नहीं जा सकता. वो फ्रेंडली मैनर में उसने मांग लिया, वो अलग बात है, बट एज ए रूल उसके लिए सर्च में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे. जनरली डिपार्टमेंट डज नॉट गिव कॉपी ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ रिकॉर्ड स्टेटिंग इट इज नॉट रिक्वायर्ड. स्टेटमेंट की कॉपी आपको मिलनी चाहिए सर, दैट इज योर राइट. वो आपको फाइट करना होगा. Assessing officer asking for toll receipts for purchase of goods. Usually we do not give records of this out. सर ये toll receipts की जो बात है ना, ये
एमिनेट हो रही है 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, रिसीट ऑफ गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। फेक इनवॉइसिंग के केसेस में ये डिमांड की जाती है टोल रिसीट कि आप प्रूव करो कि आपने गुड्स रिसीव की है। और अगर टोल रिसीट आपके पास नहीं है, मानिए, और ये अभी की परचेज है, तो आप ऑफिसर को प्लीज ये बोल दो कि सर आप अपनी टोल टोल वाली जो डेटाबेस है, बेसिकली ई वे बिल की जो डेटाबेस है विच इज रिकॉन्साइलिंग विद द टोल रिकॉर्ड्स, आप उसमें चेक कर लो इस ट्रक की डिटेल को, आपको वहां से मिल जाएगा कि एक इसने हमारे बॉर्डर को क्रॉस किया है और किस डेट में क्रॉस किया वो भी आपको मिल जाएगा। सो दो टोल रिकॉर्ड्स इज अवेलेबल, नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन में आज के समय में होनी चाहिए, मगर अगर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो आस्क द ऑफिसर टू चेक फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द टोल रिकॉर्ड्स। वो किसी भी ट्रक की नंबर मार के दे कैन गेट एज टू ये ट्रक, इस ट्रक ने कहाँ कहाँ क्रॉस की है, कौन कौन से दिन में किस समय में कौन से टोल को क्रॉस की है। सो दैट राइट यू हैव। I think all the questions of the members have been taken by you, sir. A very well deliberated session by you. Now I request CA Jagdish Singh ji to kindly say a few words and formal vote of thanks for the speaker of the day. Thank you, Vikas ji. First of all, Vikas ji, aapka dhanyawad. I would say thank you to you because you are just moderating this session, this webinar. Without the help of our professional members when they are working as a moderator or as a coordinator of the program, it's a very I would say it's a helping hand to the profession because arranging such type of the webinar, and that is not possible without the help of our very respected member. Those are giving their contribution, are the supporting hand with the NIRC. So first of all, Vikas ji, aapka bahut bahut dhanyawad. So if I say something about Ayush bhai, then Ayush Sarab ji, I was listening you from the last 20 minutes. The PPT which you have presented, so that is a very informative presentation. And the things which you were, discussing with the member, the query which you have solved, obviously, it's a totally depend upon the experience. You have a vast experience, so that is why you are just giving the answer of the query in a very simple mode. So that is I would say thank you to you also, Ayush bhai, because your experience is actually उसी से ही presentation निकलती है, उसी से ही आपका जो lecture का जो flow होता है. So that shows with the experience of the speaker. So thank you, Ayush Sarab ji, as a speaker for this webinar. So we are arranging this, this GST के ऊपर जो हमारा boot camp था. So today was the third day, I would say. So already 2 days we have done earlier. So this was the third day for the benefit of the members. So thank you, Ayush ji, for your deliberation, for your precious time, your knowledge sharing, and every efforts which you have done for the benefit of our profession and member as well. I think with just those- उससे पहले मैं एक और चीज कह दूं. Tomorrow we have another webinar that is on the topic of how to become a IB this insolvency bank corruption professional. So IBC के ऊपर हमारा एक कल webinar है. The time would be 4 to 6. So my request to the present member, please attend that webinar also 4 to 6 tomorrow, and also spread that information to the other members of the profession so that they can join that program and they can take benefit of that program. So now I would request to the office, please Sanjeev ji, present the memento or the token of love on from the side of NIRC for our very respected speaker Ayush ji. This is for you, for your contribution. And this Sanjeev ji, please change करें. This is Vikas ji, आपके लिए जो आपने योगदान दिया आज के वेबिनार में. Thank And you, sir. हमारे हाँ जी, always welcome, sir. On behalf of NIRC, I would say thank you very much to the speaker, to the coordinator, and of course to the branch, the chairman. I don't know, Parminder ji was there or not, but He was yes, हाँ yes. तो परमिंदर जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने भी अपना समय दिया. And thank you all the present in this webinar to make this webinar very successful, very useful, and of course इसी की वजह से, आपकी अटेंडेंस की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है.
So that is why we are planning, more webinar for the benefit of members. So thank you very much. Thank you, office. Thank you, speaker, and thank you, moderator, sir. And thank you, everyone, for joining this webinar. Good Thank day you. to everyone.